आता हांगा पळया CFT. CFT म्हणल्यार कितें? क्रिस्टल फील्ड थियरी. आता हो थियरी कितें सांगता? This theory explains us about repulsion between d orbitals of central metal atom and d orbitals of approaching ligand. हो थियरी की सांगतलो रिपल्शन सांगतलो. कोणाच रिपल्शन आसतले? d orbital of central metal atom and d orbital of ligand. हे दोघी जणांची d ऑर्बिटला मध्ये किती जातले? रिपल्शन. सो हे रिपल्शनाच कॉन्सेप्ट आसता पळय हो थियरी सांगतलो. पळय आता कॉम्प्लेक्स बी दोन टायपाचे आसता न्हू, एक आसता ऑक्टाहेड्रल आणि एक आसता टेट्राहेड्रल. आता पहिल्यान पळया फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सीस और कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स म्हळ्यार कितें? कंपाउंड्स. म्हाका सांग ML6 कितें? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड. तसं लिगेंड आसा न्हू. ऑक्टाहेड्रल म्हळ्यार कितें? 6 लिगेंड्स. आता हो मेटल पळय, हो कितें? सेंट्रल मेटल एटम आणि हे कितें? लिगेंड्स L L L L L. आता मेटला कडेन कितें आसतले? 6 d ऑर्बिटल आसतले. अशें करून 6 d ऑर्बिटल्स आसतले हेचे कडेन. 1 2 3 4 5 6. एक्चुअली 5 d ऑर्बिटल आसता, एक डिजेनरेट d ऑर्बिटल आसता. बट याद दवरा अशें चिंता मेटला कडेन कितले ऑर्बिटल आसतात? 6 d ऑर्बिटल आसतात. आता लिगेंडा कडेन बी ऑर्बिटल आसतले न्हू आपल्याले d ऑर्बिटल. म्हाका सांग लिगेंड कितें करता? आपल्या लोन पेअर डोनेट करता कोणाक? सेंट्रल मेटल एटम. बट ते लोन पेअर खंय स्टोर आसता? इनसाइड d ऑर्बिटल. इनसाइड d ऑर्बिटल. सो बेसिकली हे लिगेंड पळय मेटला कडेन कितें आसात? d ऑर्बिटल आसात, आपल्याला d ऑर्बिटल आसात. लिगेंडा कडेन आपल्या d ऑर्बिटल आसात. आणि ते d ऑर्बिटला भितर कितें आसा? लिगेंडाचे d ऑर्बिटला भितर कितें आसा? लोन पेअर्स. आता लिगेंड कितें करतलो? आपल्या लोन पेअर दितलो कोणाक? सेंट्रल मेटल एटम. आता कितें जातलें? जेन्ना लिगेंड आपल्या लोन पेअर दितलो, लिगेंडाची d ऑर्बिटल आणि मेटल एटमाची d ऑर्बिटल हेंचे मध्ये कितें जातलें? रिपल्शन. कित्याक हॉबी d आणि हॉबी d न्हू. हेंचे मध्ये कितें जातलें? रिपल्शन. हेंचे मध्ये कितें जातलें? रिपल्शन. काय रिपल्शन जाल्यार कितें जातलें बरं? d ऑर्बिटल ही मेटल एटमाची d ऑर्बिटल आसा पळय तेंची एनर्जी वाडटली. कळ्ळें? जेन्ना पळय हेंचे पळय हे सगळे d ऑर्बिटल्स कितें करतात? हे d ऑर्बिटल्स रिपेल करता न्हू. कितें जातलें? सेंट्रल मेटल एटमाचे जे d ऑर्बिटल आसा पळय तेंची एनर्जी वाडटली. d ऑर्बिटलाची एनर्जी वाडटली अशी. सो कळ्ळें कितें आसता? CFT की सांगता दिस थियरी एक्सप्लेन्स अस अबाउट रिपल्शन बिटवीन d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अँड d ऑर्बिटल्स ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स. आता हांगा पळया हांगा कितें d ऑर्बिटल आसा? 5 d ऑर्बिटल. हे कितें? d ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट. d ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट म्हळ्यार कितें? आता हो मेटल आसा पळय तो बॉन्डिंग करना हेंच्या वांगडा. d मेटल कितें आसा? फ्री स्टेट आसा. d ऑर्बिटला म्हणजे मेटलाची d ऑर्बिटल आसा पळय ते पार्टिसिपेट करनात इन बॉन्डिंग इनिशियली. म्हाका इनिशियली मेटलच आसतलो न्हू. मागीरच लिगेंडाक आपल्या लोन पेअर दितले आणि कंपाउंड मेळटलो आमकां. सो इनिशियली कितें आसता? मेटलाची d ऑर्बिटल खाली आसता. म्हळ्यार कितें? एनर्जी भी कितें आसतलें? कमी आसतलें. सो d ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट मतलब अभी ना ये मेटल मतलब इनके जो d ऑर्बिटल्स है वो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. मेटल ने अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया नहीं है, वो अकेला है. तब इनकी d ऑर्बिटल्स की एनर्जी इतनी होगी इस लेवल तक स्टेबल. आज की जातले हो d ऑर्बिटल की जातले रिपल्शन. d ऑर्बिटल की जातले रिपल्शन. सो हे d ऑर्बिटल्स आणि हे d ऑर्बिटल्स मध्ये की जातले रिपल्शन. रिपल्शन झाला की जातले हे d ऑर्बिटलाची एनर्जी वाढतली या देवतली. ड्युरिंग बॉन्डिंग की जातले हे d ऑर्बिटलाची एनर्जी वाढतली न्हू. ना एनर्जी वाढत पळय. आता कितें म्हणटलो? d ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स. आता मेटल फॉर्म जाता. आता म्हळ्यार एक कंपाउंड फॉर्म जाता. आता कंपाउंड फॉर्म जाता. इनिशियली मेटलाची d ऑर्बिटल कडेन एनर्जी आसना. बिफोर कितें? बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. जेन्ना कंपाउंड फॉर्म जाता तेन्ना कितें जाता? d ऑर्बिटल म्हणजे मेटलाची d ऑर्बिटलाची एनर्जी वाडटा अशें जाता. हे कितें? d ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट. हे कितें? d ऑर्बिटल्स इन कॉम्प्लेक्स. आता d ऑर्बिटल कितें आसता? 5 d ऑर्बिटल आसता न्हू. खंयची आसता ती? dxy आनी कितें आसता? dyz आनी कितें आसता? dxz dx² - y² आनी कितें आसता? dz². आज कितें जाता? हे d ऑर्बिटल आसता तितलें स्टेबल आसना. कितें? चड एनर्जी न्हू. चड एनर्जी म्हळ्यार लेस स्टेबल न्हू. बरें आसा. जे बी कंपाउंडा कडेन चड एनर्जी आसता तो कितें आसता? लेस कितें? जे बी d ऑर्बिटल आसता पळय कोणा हेंची एनर्जी चड आसा न्हू. हो स्टेबल आसतलो अनस्टेबल आसतलो? d ऑर्बिटल्स अनस्टेबल आसतले. जाल्यार कितें जातलें? ही d ऑर्बिटल स्प्लिट जातले इंटू 2 पार्ट्स. हे d ऑर्बिटल स्प्लिट जातले इंटू 2 पार्ट्स. हांगा 2 ऑर्बिटल आसतले आनी हांगा कितें आसतले?
तीन ऑर्बिटल असतले. आता वयर कोण असतले डी झेड स्क्वेअर आणि डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. सकल किती असतले उरिले डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड. पहले इसके पास कुछ और, पहले मेटल क्या था फ्री स्टेट में था तो उनके डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉन्डिंग में नहीं, मतलब इनकी एनर्जी कम होगी. जब ये बॉन्डिंग करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, इन सबके बीच में रिपल्शन होगा, तो इस डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी. जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी वो अनस्टेबल फील करेगा. जेन्ना अनस्टेबल आसतलो तो दोन पार्ट्सान ब्रेक जातलो हो डी ऑर्बिटल, ही पांचवी डी ऑर्बिटल ब्रेक जातले. हांगा दोन आसतले आणि हांगा सकल किती आसतले तीन आसतले. ओनली डी ऑर्बिटल हांगा किती म्हणटले डी झेड स्क्वेअर डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर आणि सकल किती आसतले डी एक्स वाय डी वाय झेड एंड डी एक्स झेड अशें. आता बेस लाइन आस पई तेका आमी कितें म्हणटात बे सेंटर. अब ये बे क्यों रखा मुझे भी मालूम नहीं है पर होता है, एनसीईआरटी में लिखा है बे सेंटर. बे सेंटर किती एक रेफरन्स लाइन. आता फ्रॉम बे सेंटर आणि हो हेंचे मध्ये डिस्टन्स किती बे सेंटर एंड दिस डी ऑर्बिटल्स और डिस्टन्स किती हो एनर्जी किती ये एनर्जी गॅप किती 2/5 डेल नॉट. और डेल नॉट किती बरा डेल नॉट आमी कितें म्हणटात सीएफएसई म्हळ्यार किती डेल नॉट किती क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. स्प्लिट जायना तो डी ऑर्बिटल हेका आमी एनर्जी म्हणटात. हॉबी एनर्जी आणि हॉबी एनर्जी. हांगा एनर्जी किती आसा 2/5 डेल नॉट, हांगा एनर्जी किती आसा 3/5 डेल नॉट. डेल नॉट आमी कितें म्हणटात सीएफएसई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. कळ्ळें तुमकां कितें आसता सीएफटी की सांगता रिपल्शन बिटवीन डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड डी ऑर्बिटल्स ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स. इनिशियली मेटल एटम कितें आसता फ्री आसता सो डी ऑर्बिटला कडेन कितें आसतले लेस एनर्जी आसतले. आफ्टर रिपल्शन कितें आसता एनर्जी वाडटा आनी तो अनस्टेबल फील करता आनी तो दोन पार्ट्सान ब्रेक जाता. अशें कळ्ळें तुमकां इतलें बरें. राव 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 आता ह्या लेवल आमी कितें म्हणटा खबर T2G T2G आणि हो आसता EG T2G. बट याद दवरा T2G सदां सकयल आसतलो फॉर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स एंड वयर कितें आसतले EG T2G EG. सो आमकी शिकिले ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स नाव टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स. सो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स म्हळ्यार कितें ML4 सारखे ML4. सो ह्या मेटला कडेन कितले डी ऑर्बिटल आसात 1 2 3 4. कितले लिगेंड आसात 1 2 3 4. दर एक लिगेंडा कडेन एक ऑर्बिटल आसतले. आता हे ऑर्बिटल मध्ये किती जातले रिपल्शन रिपल्शन एमचे मध्ये किती जातले रिपल्शन एमचे मध्ये किती जातले रिपल्शन आणि एमचे मध्ये किती जातले रिपल्शन. इनिशियली मेटल बॉन्डिंगा भितर पार्टिसिपेट करना तेन डी ऑर्बिटल किती आसतले इन फ्री स्टेट. जेन्ना हेंचे मध्ये रिपल्शन जातले लिगेंडाची डी ऑर्बिटल आणि मेटलाची डी ऑर्बिटल मध्ये जेन्ना रिपल्शन जातले हे डी ऑर्बिटलाची एनर्जी वाडटल्या देवतली वाडटली इतलं वाडटली. आता कितें हांगा आसा डी ऑर्बिटल्स इन कॉम्प्लेक्स. आता हेचे कडेन चड एनर्जी आसा न्हू सो अनस्टेबल फील करतलो. सो डी ऑर्बिटल कितें जातलो ब्रेक इनटू टू पार्ट्स. थंय कितें आशिल्ले दोन वयर आशिल्ले पळय तीन सकयल आशिल्ले फॉर ऑक्टाहेड्रल. फॉर टेट्राहेड्रल कितें आसता तीन वयर आसता दोन सकयल आसता. तीन असल्यार T2G दोन असल्यार EG. याद दवर हांगा कितें आसतले dx स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर dz स्क्वेअर हांगा dxyz dxy dyz एंड dxz अशें. थंय कितें आशिल्ले 2/5 डेल्टा नॉट आशिल्ले न्हू आनी हांगा कितें आशिल्ले 3/5 डेल्टा नॉट आशिल्ले. आतां हांगा उलटा हांगा कितें आसतले 3/5 डेल्टा नॉट आसची ना डेल्टा टी आसता कित्याक टेट्राहेड्रल न्हू. ओ म्हणल्यार ऑक्टाहेड्रल टी म्हणल्यार टेट्राहेड्रल. हांगा 3/5 वयर आसतले 2/5 सकयल आसतले उलटा कर. थंय कितें आसता 2/5 वयर आसता 3/5 सकयल आसता. हांगा 3/5 वयर आसता 2/5 सकयल आसता. आनी डेल्टा टी कितें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स. डेल्टा ओ म्हणल्यार कितें क्रिस्टल फील्ड एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स. आनी याद दवरा डेल्टा टी इज इक्वल टू कितें 4/9 टाइम्स डेल्टा नॉट. याद दवरा और रिलेशन याद करा. CFSE for tetrahedral is equal to 4/9 times CFSE for octahedral. म्हळ्यार कितें डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा नॉट नो. फॉर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी चड आसता कंपेर्ड टू टेट्राहेड्रल. हो एनर्जी चड आसता. हांगच्यान कळटा न्हू डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा नॉट डेल्टा ओ. तशेंच कळ्ळें न्हू तुमकां बंद.
सो आम्ही D1 पहिले पळय, D2 D3 आता D4. D1 लागून काय केस असना, D2 लागून मी काय केस असना, D3 लागून मी काय केस असना. D4 येल्यार फ्रॉम D4 टू D10 आम्ही दोन केस कन्सिडर करतले, केस 1 एंड केस 2. आता D4 भितर केस 1 कितें, when del naught is less than P, when energy is less than pairing energy, when energy is less than pairing energy. म्हणल्यार कितें, हांगा लिगेंड आसतलो पळय, Ml6 घेता न्हू आमी कंपाउंड, हो लिगेंड कितें आसतलो, वीक फील्ड लिगेंड. कळ्ळें, हो एक कंडिशन, हे तुमकां दिसलो न्हू, सद्दां याद दवरा, लिगेंड कितें आसतलो, वीक फील्ड लिगेंड. इफ del naught is less than P, then लिगेंड कितें आसतलो, वीक फील्ड लिगेंड. आता D4 न्हू, हांगा कितले आसतले इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4. एक आमी स्प्लिट केले, हो कितें आसतलो Eg सेट आनी हो कितें आसतलो T2G सेट. आता 4 इलेक्ट्रॉन दिवपा जाय, हांव कितें करतलो, 1 2 3 4 हांगा दिवचो ना. हांगा हांव केन्ना दितलो, जेन्ना हांगा कितें आसूं जाय, स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड. वीक फील्ड लिगेंड आसल्यार कितें करतले आमी, 1 2 3 फोर्थ वन खंय आसतले, वयर. फोर्थ वन खंय आसतले, वयर आसतले. कळ्ळें, पॅरिंग करनाका तुमी. स्ट्रॉंग आसल्यार पॅरिंग करा, वीक आसल्यार 1 2 3 4 5 अशें करतले. अशें मागीर हे खबर आसा न्हू, 2/5 del naught आनी हो कितें आसतलो, 3/5 del naught. आता CFSE कशें फायंड करता तुमी, x इंटू -0.4, एक्साची व्हॅल्यू कितें, हांगा कितले इलेक्ट्रॉन आसात, 3, प्लस वायाची व्हॅल्यू कितें, हांगा कितले इलेक्ट्रॉन आसात, 1, सो 1 इंटू 0.6 del naught प्लस, म्हाका सांग हांगा नंबर, हांगा एक बी पॅरिंग दिसता तुमकां ना, सो झॅडाची व्हॅल्यू कितें आसतले, 0, सो 0 इंटू P. आता 3 इंटू -0.4 कितें, -1.2 del naught प्लस 1 इंटू 0.6 del naught कितें, 0.6 del naught, -1.2 प्लस 0.6 कितें, -0.6 del naught. हो आन्सर आसतलो CFSE. हां, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितें आसतलें, T2G कडेन कितले इलेक्ट्रॉन आसात, 3, सो 3 बरयलें. Eg कडेन कितले इलेक्ट्रॉन आसा, 1 आसा, सो 1 बरयलो. तशें आसता. हो केस 1 कितें, when del naught is less than P means weak field ligand. आता del naught is greater than P म्हळ्यार कितें आसतलो, स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड. सेम अशेंच बरयतले. हां, कितले इलेक्ट्रॉन आसा, 4. आता कितें करतले, 1 2 3 4 हांगा बरयची ना, कित्याक स्ट्रॉंग फील्ड आसा, सो तुमी पॅरिंग करतले, हांगा पॅरिंग करतले. 5 आसल्यार 1 2 3 4 5, 6 आसल्यार 1 2 3 4 5 6 अशें. आता CFSE कशें फायंड करतात, x हांगा एक्साची व्हॅल्यू कितें, कितले इलेक्ट्रॉन आसात, 4, सो 4 इंटू -0.4 प्लस वाया कडेन कितले इलेक्ट्रॉन आसा, 0, Eg कडेन कितले इलेक्ट्रॉन आसा, 0, सो 0 इंटू 0.6 del naught प्लस कितले पॅरिंग आसा हांगा, एक पॅरिंग आसा न्हू, सो 1 इंटू P. सो आन्सर कितें येतले, 4 इंटू -0.4 कितें, -1.6 आनी हो कितें आसतलो, 0 प्लस 1 इंटू P कितें, P. सो आन्सर कितें, -1.6 del naught प्लस P. हो आन्सर आसा. आता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, T2G कडेन कितले इलेक्ट्रॉन आसा, 4 आनी Eg कडेन कितले इलेक्ट्रॉन आसा, 0. अशें आसता. मागीर सेम फॉर D5 बी दोन केस आसतले, del naught less than P म्हळ्यार कितें, वीक फील्ड लिगेंड, del naught greater than P म्हळ्यार कितें, स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड. आता D5 वीक फील्ड लिगेंड न्हू, सो 1 2 3 4 5. वीक फील्ड आमी कितें करतात, 1 2 3 4 5 अशें आसतले. CFSE कशें फायंड करतले, हांगा कितले इलेक्ट्रॉन आसात, 3 इंटू कितें, -0.4 del naught प्लस हांगा कितले इलेक्ट्रॉन आसात, 2, सो 2 इंटू 0.6 del naught प्लस हांगा पॅरिंग आसा ना, सो 0, झॅडाची व्हॅल्यू कितें आसतले, 0, सो 0 इंटू P. आता 3 इंटू -0.4 कितें, -1.2 आनी 2 इंटू 0.6 कितें, +1.2. आन्सर कितें येतले, 0. -1.2 + 1.2 0. आता केस 2 कितें, del naught greater than P म्हळ्यार कितें, स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड. D5 म्हळ्यार 1 2 3 4 5. आता 5 इलेक्ट्रॉन कशें बरयतले, 1 2 3 4 5. स्ट्रॉंग आसल्यार हांगाच पॅरिंग करता आमी, वीक आसल्यार सगळ्या पयलीं आमी एक इलेक्ट्रॉन दितात वयर सकयल. हां, मागीर CFSE कितें आसतलें, हांगा कितले इलेक्ट्रॉन आसात, 5 इंटू -0.4 del naught प्लस हांगा कितले इलेक्ट्रॉन आसात, 0 इंटू 0.6 del naught प्लस कितले पॅरिंग दिसता, 2, सो 2 इंटू P. कितें आन्सर कितें येतलें, 5 इंटू -0.4 कितें, -2 del naught प्लस हो 0 न्हू, प्लस 2 इंटू P कितें, 2P. हेची इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बरोबर. हां, हेची इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितें आसतलें,
T2G3 EG2 काय T2G कडे 3 इलेक्ट्रॉन EG कडे 2 इलेक्ट्रॉन ना हांगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किती असतले T2G5 आणि EG0 EG0 कळटा कशें आसता घरा तुम्ही हे सॉल्व करा D6 to D10 by using same concepts बंद कर आता कितें ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स सगळ्यात स्ट्रॉंग लिगेंड कोण आसतलो स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड कोण आसतलो कोबाल्ट मागीर NO मागीर EN मागीर NH3 आणि सगळ्यात वीक फील्ड लिगेंड कोण आसतलो आयोडीन आता कशी याद करतले एका हय CO कोबाल्ट आणि कोबाल्ट म्हणले ना सॉरी CO म्हळ्यार कितें कार्बन मोनॉक्सायड हो CO म्हळ्यार कोबाल्ट एक्चुअली CO कितें आसतलो सेंट्रल मेटल एटम कळ्ळें चुकून म्हाका तोंडांतल्यान येयलो रे कोबाल्ट CO म्हळ्यार कितें कार्बन मोनॉक्सायड मागीर आतां सांग पया मागीर हे कशें याद करतले अशी याद जावची ना न्हू कशें याद करतले एक बार सचिन क्लास से फरार एक बार सचिन क्लास से फरार स्पेलिंग इतने स्वड़ा पहिना फरार और अल्कोहल को ते खबर रे राव शिकता आपल्याला तकलील आहे और अल्कोहल को म्हळ्यार COO असतं पळय अशें ऑक्सिलेट अशात बरयता न्हू आमी सो को अशें याद करा तुम्ही को म्हळ्यार और अल्कोहल को पानी से प्यार पानी म्हळ्यार H2O मागीर NC कशें बरयतले नाश्ता हुआ उड़ता अमोनिया नाश्ता हुआ उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कोरिया जातले राव अरे हा रे हा रॉंगा सांग करेक्ट करा म्हाका रॉंग ओके हांग पया एक बार हांग पळयनाकात ते मरो हे कितें आसता हें पळयना हांगच्यान पळया अशें हांगा पळयन तुमी याद करा एक बार सचिन क्लास से फरार और अल्कोहल को पानी से प्यार नाश्ता हुआ उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कोरिया अशें याद करा बदला म्हणा हांगच्यान तुमी पळयन म्हणा से फरार और अल्कोहल को पानी से प्यार नाश्ता हुआ उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कोरिया याद जातले तुम्ही अशें याद करपाक शकतात क्नॉक्स म्हळ्यार C म्हळ्यार कितें कार्बन डोनर N म्हळ्यार कितें नायट्रोजन डोनर O म्हळ्यार कितें ऑक्सिजन डोनर X म्हळ्यार कितें हॅलोजन डोनर अशें आसता कार्बन डोनर लिगेंड आसता पळय ते सारके स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड नायट्रोजन हे आसता पळय डोनर लिगेंड आसता पळय ते कितें सॉरी हॅलोजन डोनर हे लिगेंड आसता पळय ते कितें वीक फील्ड लिगेंड पण हांगा हॅलोजनच आसा न्हू कळ्ळें हांगा कितें कार्बन पळय हो स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड मागीर नायट्रोजन येता मागीर कोण येता ऑक्सिजन डोनर येता पळय मागीर कितें हॅलोजन डोनर येता पळय अशें याद दवरपाक शकतात हो बेसिकली हो बरो हो ट्रिक बरो आसा हे याद करात आता एग्जाम विचारले विच वन इज स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड F आणि OX कोण स्ट्रॉंग OX बंद चिलेटिंग लिगेंड म्हळ्यार कितें चिलेटिंग लिगेंड इज अ मोनोडेंटेट और सॉरी चुकून करा कैंसल करा डाय बरया
चिलेटिंग लिगेंड तेम तशेंच करतले न्हू. चिलेटिंग लिगेंड इज अ डायडेंटेट और polydentate ligand which donates two or more than two lone pair of electrons to central metal atom which forms a ring like structure around central metal atom called chelate ring. चिलेटिंग लिगेंड म्हळ्यार कितें, इधर तो कितें आसतलो डायडेंटेट और पॉलीडेंटेट. तो कितें करतलो, इधर दोन लोन पेअर इलेक्ट्रॉन दिवू शकता और मोर देन टू लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितें दिवपाक शकता, कळ्ळें, टू सेंट्रल मेटल एटम. आनी एक रिंग फॉर्म जातलो अशें, ते रिंगा आमी कितें म्हणटा, ते चिलेट रिंग. एक्झाम्पल पळया, COEN3. म्हाका सांग, EN कितें डायडेंटेट न्हू. आतां दोन लोन पेअर दिवचे ना, हांगच्यान एक हांगा आनी एक हांगच्यान दितलो असो. सांग, एक रिंग फॉर्म जायना. हे रिंगाक कितें म्हणटा आमी, चिलेट रिंग. चिलेटिंग लिगेंड्स कोण आसूं शकता, इधर EN तो कितें बायडेंटेट आनी ऑक्झलेट हो बी कितें बायडेंटेट आनी EDT 4- कितें पॉलीडेंटेट. तशें चिलेटिंग लिगेंड हे 3 जाण आसतले. जो रिंग फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग. एग्जाम में क्वेश्चन आता है फेमस, एक्सप्लेन चिलेट फॉर्मेशन और एक्सप्लेन चिलेट इफेक्ट. कशें बरयतले, when a didentate or polydentate ligand donates lone pair of electrons to central metal atom, to central metal atom, a ring is formed around central metal atom which is called chelate ring. एक मार्क्सचा क्वेश्चन येऊ शकता, गिव 3 examples या गिव 2 examples of चिलेटिंग लिगेंड. EN आणि कितें ऑक्झलेट. 3 कितें 3 विचारल्यार हे बी बरें, EDT. सांग भैया, ओय इधर विच इज स्टेबल कंपाउंड. आता कोण स्टेबल कंपाउंड, म्हाका सांग, कोण चिलेट रिंग फॉर्म करतलो. फर्स्ट वन. कित्याक ऑक्झलेट कितें डायडेंटेट लिगेंड, सो एक चिलेटिंग लिगेंड म्हळ्यार हो कितें करतलो, चिलेट रिंग फॉर्मेशन करतलो. चिलेट रिंग फॉर्मेशन करतलो. म्हाका सांग, हे दोन्ही हे सगळे कितें, अमोनिया कितें मोनोडेंटेट म्हळ्यार हो कितें डस नॉट फॉर्म चिलेट रिंग. हो चिलेट रिंग फॉर्म करता, हो चिलेट रिंग फॉर्म करना. हो चड आसतलो स्टेबल. कितें, दिस वन इज मोर स्टेबल. कित्याक मोर स्टेबल, ड्यू टू चिलेट रिंग फॉर्मेशन. चिलेट रिंग फॉर्मेशन, कळ्ळें, ड्यू टू चिलेट रिंग फॉर्मेशन. आता सांग पळया, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थियरी CFT एंड CFSE. कळ्ळें न्हू तुमकां, हो चिलेट रिंग फॉर्म करता, सो हो स्टेबल आसतलो. हो चिलेट रिंग फॉर्म करना, सो हो कितें आसतलो, अनस्टेबल. एक्सप्लेन CFT एंड CFSE. क्रिस्टल फील्ड थियरी की सांगता, when ligand approaches a central metal atom, degenerate d orbitals of coordination compound splits into 2 energy set. One is higher energy set and other one is lower energy set. This is called crystal field theory. Magit, the energy difference between lower energy set and higher energy set is called crystal field splitting energy. कळटा, थियरी भितर शिकयला सगळे. What is the difference between homoleptic complex and heteroleptic complex? Homoleptic complex म्हळ्यार कितें, homoleptic complex are the compounds which has identical ligands. आता coordination compound पळय, एकच टायपाचो लिगेंड आसा न्हू हांगा, which is ammonia. हो लिगेंड म्हळ्यार हो कंपाउंड कितें आसतलो, homoleptic complex. हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स म्हळ्यार कितें, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आर दी कंपाउंड्स which has different number of ligands. आता कंपाउंडा भितर कितें कितले लिगेंड आसात, 3 डिफरंट लिगेंड ना, क्लोरीन H2O आनी कितें Br. हो कितें आसतलो, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. होमोलेप्टिक म्हळ्यार कितें, सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स आसतले आनी हेटेरोलेप्टिक म्हळ्यार कितें, डिफरंट नंबर ऑफ कितें आसतले, लिगेंड्स आसतले. आता प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विथ AgNO3. आता हो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आसा पळय,
आता कोऑर्डिनेशन कंपाउंडा भितर कितले क्लोरीन भायर आसा 2 क्लोरीन भायर आसा प्लस हांगा कितें आसा AgNO3 आतां हांगा कितें जातलें सिन्स 2 Cl2 भायर आसा न्हू आमकां कितें मेळटलें 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट AgNO3 आमी कशें ब्रेक करतले Ag प्लस NO3 मायनस आनी Cl2 म्हळ्यार कितें Cl मायनस सो Ag प्लस कितें करतलो Cl मायनसा बर कसलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करतलो AgCl हांगा 2 Cl2 आसा जाल्यार हांगा कितले मोल्स ऑफ AgCl मेळटले आमकां 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आता हे कंपाउंडा भितर पळया हे कंपाउंडा भायर कितले क्लोरीन आसात 1 क्लोरीन सो कितले मोल ऑफ AgCl मेळटले 1 मोल ऑफ AgCl काय तशें आता हे ब्रॅकेटा भितर कितले Cl आसात 0 Cl आसा सो कितें मेळटले 0 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट ब्रैकेट के बाहर जितने क्लोरीन लगेंगे उतने नंबर ऑफ हमें क्या मिलेंगे कितना मिले नंबर ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट मेळटले Ag प्लस Cl मायनस किती दितलो AgCl दितलो आता AgCl कितें आसता व्हाईट प्रेसिपिटेट आसता व्हाईट सपोज ब्रॅकेटा भायर सपोज 3 Cl3 आसा सो कितले AgCl मेळटले 3 मेळटले AgCl फॉर्म जाता सो व्हाईट प्रेसिपिटेट जाता पळया सोड when a coordination compound CrCl3.5H2O is mixed with AgNO3 2 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound write structural formula of complex structural formula of complex हे कॉम्प्लेक्सा तुमकां कशें बरयतले कितले मोल AgCl मेळटा 2 मेळटा कितले Cl भायर आसतले 2 Cl भायर आसतले सारके म्हणजे हेची स्ट्रक्चर फॉर्म्युला अशें दिसचे ना अशें हेका अशें बरोवंक शकना CrH2O5 H2O5 Cl2 कित्याक हांवें Cl2 कित्याक बरयलां हांगा भायर कित्याक 2 मोल ऑफ कितें मेळटा AgCl मेळटा सो हो कशें आसता हेची स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कशें आसतलें अशें आसतलें हो आन्सर स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ कॉम्प्लेक्स अशें म्हणल्यार इफ इट गिव्स 3 मोल्स ऑफ AgCl जाल्यार कितें आसतलें हांगा H2O5 आनी हांगा कितें आसतलें Cl3 सेकंड हेजे IUPAC नेम बरया हेजे IUPAC नेम कितें आसतलें पयलीं कॅटायनाचें नेमिंग करता आमी H2O पयलीं बरयतले Cl पयलीं बरयतले एक्वा वॉटर न्हू W चिंतनाकात A सो कितें बरयतले पेंटा एक्वा मागीर क्लोरिडो मागीर हो कितें प्लस आनी मायनस सो क्रोमियम आसतले क्रोमियम आतां हेजे ऑक्सिडेशन नंबर कितें आसतलें हांगा X प्लस 5 into 0 प्लस हांगा कितें आसतलें हांगा 2 प्लस आसतलें मागीर कितें आसतलें हांगा -1 इक्वल टू कितें 2 सो एक्साचे वॅल्यू कितें जातलें +3 एक्साचे वॅल्यू कितें जातलें +3 मागीर गॅप कितें बरयतलें हांगा क्लोरायड ओन्ली क्लोरायड हे नांव आसतलें गेलें मागीर डिफरन्स बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट आनी कॉम्प्लेक्सा मध्ये डिफरन्स कितें डबल सॉल्ट कितें आसता इट रिटेन्स इट्स आयडेंटिटी इन सॉलिड फॉर्म बट लुजीस इट्स आयडेंटिटी इन सोल्युशन सॉलिड फॉर्मा भितर कितें सारको उरतलो असो जेन्ना आमी हेका सोल्युशना भितर घालतले हो कितें जातलो डिसोसिएट जातलो डू नॉटा कॅन्सल करा आणि विल बरया ते आणि ईट आणि गिव्स आस पळय तेंचे मध्ये हे ओवर हे बरया डस नॉट बरया सो कितें करता आपल्याला आयडेंटिटी कितें रिटेन करून दवरता इन सॉलिड फॉर्म जशें आमी एका लिक्विडा भितर घालतले तो आपल्याला आयडेंटिटी कितें करतलो लूज करतलो सो रिटेन्स इट्स आयडेंटिटी इन सॉलिड फॉर्म बट लुजीस इट्स आयडेंटिटी इन सोल्युशन म्हणल्यार कितें आपल्याला आयडेंटिटी लूज करता सोल्युशना भितर आणि तो डिसोसिएट जाता सो इट विल डिसोसिएट इनटू आयन्स इट विल गिव टेस्ट इन सोल्युशन डिसोसिएट जाता न्हू तो सो टेस्ट दितलो सोल्युशना भितर टेस्ट दितलो आपल्याला
मागीर कॉम्प्लेक्स म्हळ्यार कितें रिटेन्स आयडेंटिटी इन बोथ सॉलिड एज वेल एज इन सोल्युशन म्हळ्यार सॉलिडा भितर असोच आसा इन सॉलिड फॉर्म असोच आसा सपोज एका सोल्युशना भितर घायल्यार हो डिसोसिएट जातलो ना आपल्याला आयडेंटिटी कितें करतलो तो रिटेन करतलो बोथ इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन सोल्युशन सो रिटेन्स आयडेंटिटी इन बोथ सॉलिड एज वेल एज इन सोल्युशन म्हळ्यार कितें इट डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू आयन्स सो तो आयन म्हळ्यार भितर तो डिसोसिएट जायना म्हळ्यार तो टेस्ट दितलो सोल्युशना भितर आपल्याला कंपाउंडाची टेस्ट दितलो तो ना सो इट डज नॉट गिव टेस्ट इन सोल्युशन सो डबल सॉल्ट कितें जाता डिसोसिएट जाता सो तो टेस्ट दिता हो कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट जायना म्हळ्यार तो टेस्ट दिना Normal compounds, so NaCl, that also. मागीर कंपेर कंडक्टिविटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आता एग्जाम कितें आसतले 3 कंपाउंड दिल्ले आसतले 3 या 4 दिल्ले आसतले आतां विचारतले कोणाची कंडक्टिविटी चड हेजे या हेजे कोण चड फास्ट मोशन करतलो सोल्युशना भितर हो कंपाउंड हे कंपाउंडाचे आयन्स फास्ट मोशन करतले या हे कंपाउंडाचे आयन्स फास्ट मोशन करतले सोल्युशना भितर तशें क्वेश्चन येता म्हाका सांगा टोटल कितले आयन आसात हो म्हाका सांग 1:3 टायप इलेक्ट्रोलाइट न्हू एक आनी हांगा 3 टोटल कितले आयन्स आसात 4 आयन्स Complex and one is there. 4 आयन्स सारखे हेचे भितर कितले आयन आसात कोण राव 4 आयन्स मागीर हांगा 1:2 1:2 कितले आयन आसात 1 + 2 3 आयन्स मागीर हांगा 1:1 कितले आयन आसात 2 आयन्स मोर नंबर ऑफ आयन्स म्हळ्यार कितें मोर कंडक्टिविटी मोर नंबर ऑफ आयन्स म्हळ्यार कितें मोर कंडक्टिविटी हेजी कंडक्टिविटी चड आसतले कंपेर्ड टू दीस एंड कंपेर्ड टू दीस एक सपोज ए कंपाउंड ए कन्सिडर करता कंपाउंड बी आनी कितें कंपाउंड सी सो कंडक्टिविटी हे कितें आसतलें रिलेशन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी याद दवरा कंडक्टिविटी कितें कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड is directly proportional to number of ions हेचे चड नंबर ऑफ आयन्स आसा म्हळ्यार हेची कंडक्टिविटी चड आसतले हेचे कमी नंबर ऑफ आयन्स आसा म्हळ्यार हेची कंडक्टिविटी कमी आसतले तशें सो चॅप्टर कंप्लीट